Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. So I hope everyone is doing fantastically well. So students, as you know, we are making an analysis of CLAT paper 2021. CLAT, as you all know, Common Law Admission Test. And today we are going to analyze the current affairs GK paper of year 2021. What kind of questions came in 2021? What kind of GK part? What kind of current affairs question came? It is just an insight for the preparation for your forthcoming exam. And हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपको इस पेपर का जो इंसाइट है, जो फील है, वो समझ आ जाए, ताकि आने वाले एग्जाम में हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना रहे, आइडिया रहे हमारे दिमाग में कि किस तरीके का पेपर जो है वो आ सकता है. सो लेट्स बिगिन. दिस इज क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट करंट अफेयर एंड जीके पार्ट 2021. और एक बात मैं आपको यहां और क्लियर कर दूं कि करंट अफेयर्स के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, all those questions come in the form of comprehensions. You might be having case studies also. कुछ comprehension आएंगे. और एक चीज आप क्लियर कर लें कि जो comprehensions हैं, जो paragraphs हैं, they are just the thinking process, creating the thinking process for you. वो आपके लिए एक सिर्फ प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि उसी पैराग्राफ के बीच में से आपको कुछ क्वेश्चंस मिले. इट विल नॉट बी अ केक वॉक. ऐसा आसान नहीं है. वो प्रीसीडिंग्स एंड सक्सीडिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. तो पैराग्राफ आपको सिर्फ एक दैट इज अ वे है, दैट इज अ मेथड जस्ट टू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, राइट? सो लेट बिगिन द फर्स्ट वन. आई एम जस्ट getting the paragraph for you, and then we will make the question. We will start the question for all. Starting in April 2020, China amassed a large number of troops and armaments along the disputed line of actual control. आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो disputed boundary है, that is called LAC, line of actual control, in eastern Ladakh and other areas along the LAC, leading to standoffs and skirmishes at certain points. The People's Liberation Army (PLA) moved into Indian territory. जो China's army है, that is known as PLA, that moved into Indian territory and built fortified structures and defenses, changing the status quo on the ground. They totally changed the situation which was there earlier. While there are differences in perception on the alignment of LAC, over the years, both sides concluded a series of agreements to maintain peace and tranquility on the border, while talks continued to resolve the dispute. Right? Since then, several friction points emerged in eastern Ladakh, and both sides initiated diplomatic and military talks aimed at disengagement and de-escalation. With India pushing for the restoration of status quo, India wants that status quo, the same situation should be established, and of pre-April, and means before April. India and China earlier reached an understanding for phased disengagement from all friction points, followed by de-escalation from the depth area along the LAC. This is the paragraph for India-China dispute in the month of April 2020, right? So this is the background of the questions. Now one by one we start the questions. Let's see. Violent clashes between Indian and Chinese army, which resulted in death of around 20 Indian soldiers and an unknown number of Chinese soldiers, occurred on which date?
This clashes of India and China army occurred? A. May 5th, 2020. B. June 11 to 12, 2020. C. June 15, 16, 2020. And D. July 13, 2020. So any idea? That is why I am saying, listen, there was not any date given in this paragraph. So the actual situation is, हमारा जो वास्तविक जो परीक्षा है वो यही है कि उस पैराग्राफ से संबंधित हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं. So the correct answer would be, is it? The correct answer would be absolutely C. Yes. 15, 16, the night of 15th and the 16th, 2020, this clash was there between India and China army. Right? Second question. Where did the violent clashes between Indian and Chinese soldiers occur, which caused casualties on both sides? Just read it very carefully. Where did the violent clashes between Indian and Chinese soldiers occur, which caused casualties on both sides? Is it A. Nakula? Is it B. Dhan Singh Thapa Post? C. Galwan Valley? Or D. Siachen? Come on. Any idea? It is a place in near Sikkim and Bhutan border. So Siachen out. So what was the place? The place was absolutely C. Galwan Valley. Galwan Valley is a triangular place between Sikkim, then Nepal, Sikkim, then Bhutan, and Bangladesh wala border. That is the Galwan Valley. In 2020, the clashes were there. Next, the violent incident leading to death of soldiers took place at which point of Galwan Valley this violent incident takes place where Indian soldiers died? A. Patrol Point 13. B. Patrol Point 14. C. Patrol Point 15. D. Patrol Point 16. Where this violent incident occurred? बेटा क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग पार्टीज जो है वो स्टेशन रहती हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स. तो वो जो बॉर्डर्स हैं जिसकी प्रोटेक्शन है, दैट हैज बीन गिवन अ नंबर. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी. Patrol Point 14, where this incident took place and so many soldiers died. Right? Now, easiest. बेटा देखो, अब इसको आप समझ आना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा, you will not be having any answer, any data in that paragraph. So वो आपकी अब एक विजडम है, वो आपका इंटेलेक्चुअल एक गेन है कि आप उसको कैसे जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हो. राइट? सो द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, the length of line of actual control LAC of Indo-China border is it A 2788 kilometers, B 3213 kilometers, 3213, C 3317 kilometer, or D 3488 kilometer? So any idea? Come on. So the line of actual control length is D 3488 kilometers. It's a big number, huge. आपको मैं बताऊं, ध्यान से देखिएगा. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. India's total length, you must have done in class 8 or 9. India's total length from north to south is 3214 kilometers. And east to west India is 2933 kilometers, right? So this number, you can see the huge Indo-China border. Right? Okay, next. Which of the following was resolved by way of an agreement between India and China in February 2021? इंडिया चाइना के बीच में फरवरी 2021 में एक अग्रीमेंट हुआ. क्या रिजॉल्व किया हमने? A. Chinese side will move back its troops to east of Finger 8 and Indian side will move its troops to its permanent base near Finger 3. चाइना भी पीछे हटेगा, इंडिया भी पीछे हटेगा.
Both sides shall demolish structures built after April 2020. अप्रैल 2020 के बाद जो कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो स्ट्रक्चर्स आपको डिमोलिश करने हैं. Moratorium on patrolling in the affected area. So these three statements are given, or D, all the above. What agreement between India and China took place? Come on. मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये पैराग्राफ पढ़ा है और आप करंट अफेयर्स में बिलीव करते हो, न्यूज को रिलीजियसली फॉलो करते हो, तो ये सब चीजें आपके लिए इट विल बी कंप्लीटली अ केक वॉक, इजी हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव. All three statements are correct, which are in the agreement of India and China. Right? Now, again, paragraph number 2. देखिए, as soon as the coronavirus hit the world, COVID-19 hit the world, India emphasized the imperative of collaboration to overcome the inimical health and economic impact of the virus. It was with this objective that the Indian government organized a virtual meeting of SAARC leaders on March 15, 2020. I hope you all know the SAARC countries: India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, and Maldives. Right? So these are the 7 countries in SAARC group. In the initial months of pandemic, starting में pandemic जब शुरू हुआ, India, by virtue of the fact that it is the pharmacy of the world, है ना, पूरी दुनिया के लिए जो एक फार्मेसी है, ramped up production of essential medicines like hydroxychloroquine, paracetamol, etc., as well as personal protection equipment, PPE kits, ventilators and masks. This India had taken initiatives. In the rapidly evolving global geopolitical landscape, the healing and supportive actions of India through supply of Covishield and Covaxin. अब आपको ये याद होगा कि we had 2 vaccines were there. Covaxin made by the Indian government, Covishield, the Serum Institute in Pune. आपको पता होगा, आपके भी लगी है जी कोविड या कोवैक्सीन या कोविशील्ड. These vaccines will have a huge impact in promoting peace, security, cooperation and prosperity in the region. Due to these vaccinations, due to these vaccines, एक peace की feeling आई, harmony create हुई among the 7 countries of the SAARC region and the world. This is all the more commendable when there are only few countries in the world who have thus far been able to successfully manufacture COVID-19 vaccines. And India was one of the leading nations in the world who made successful vaccines to combat COVID-19. ये 2 हमारी वैक्सीन जो थी, उसके बाद स्पुतनिक आपने देखा, या और अदर वैक्सीन आई, बूस्टर डोज आ गई, बट कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन दुनिया के लीडिंग कंट्रीज के साथ हम भी खड़े थे कतार में. नाउ ऑन दिस बेसिस हाउ क्वेश्चंस केम, लेट्स सी. द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया में, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? ए, श्री मनसुख मांडविया. डॉक्टर हर्षवर्धन, बी. श्री अश्विनी कुमार चौबे, सी. श्री राजनाथ सिंह, डी. एनी आइडिया? Undoubtedly, before COVID, it was Dr. Harshvardhan, before COVID. But now, Shri Mansukh Mandviya, A. Correct answer is A. Haji, what is the amount that India has created to contribute in SAARC COVID-19 emergency fund? How much amount India created for SAARC, for all the countries, COVID-19 emergency fund? Is it A, $20 million, B, $10 million, C, $15 million, और D, $17 million? बेटा यहाँ पे मेरी फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अनलेस और करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता
कि जैसे 6-7 में पढ़ते थे, पैराग्राफ आ गया, उसके बीच में क्वेश्चन है, मार्क किया और काम खत्म. Current affair means you have to learn, you have to have all the information about this event, this affair. तभी ये questions clear होंगे. Correct answer is $10 million. This was created by India to combat this COVID-19 at SARC. G, next. Which of the following countries were the first to receive supplies of vaccines from India? जो इंडियन वैक्सीन बनी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, which were the nations, which were the countries at first they got this vaccination from India? Is it A, Nepal, Bangladesh? Is it B, Bhutan, Myanmar? Is it C, Bangladesh, Bhutan? Or is it D, Bhutan and Maldives? Because हम 7 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो ये सारे कंट्रीज में you can have your correct answer. Absolutely, it is D, Bhutan and Maldives. You can take it out because Myanmar is not a SAARC country. म्यांमार तो SAARC कंट्री नहीं है, तो B तो अपना वैसे ही आउट हो गया. तो आपकी सर्च जो है वो और नैरो हो गई, राइट? Under which of the following initiatives has the government of India decided to supply vaccine to foreign countries? Which initiatives was taken by the Indian government? कौन सा इनिशिएटिव लिया जिसके तहत भारत ने दुनिया के बाकी देशों को वैक्सीन दी? ए, वैक्सीन उजाला. बी, वैक्सीन दोस्ती. सी, वैक्सीन मैत्री. और डी, वैक्सीन रिश्ता. क्या नाम दिया हमने उसको? किस इनिशिएटिव के तहत हमने दूसरे देशों को वैक्सीन दी है? एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज वैक्सीन मैत्री. इसका नाम रखा हमने बकायदा, ठीक है? मैत्री मतलब आपको समझ आता है, फ्रेंडशिप. चलिए, कोवैक्सीन, इंडियाज इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय. अब बेटा कोवैक्सीन किसने डेवलप किया? राइट? A, Indian Council of Medical Research, ICMR, in partnership with Bharat Biotech International Limited, BBIL. B, Indian Council of Medical Research, only ICMR. C, Bharat Biotech International Limited, only BBIL. Or D, Serum Institute of India, Pune. So, which body has developed this Covaxin? But I told you when I started this paragraph, this was developed by both these institutions at the joint efforts. Serum basically make Covishield. Covishield was developed by Serum Institute. Covaxin, Indian government का initiative. चलिए, one more paragraph. See, there is really nothing new, not already anticipated in a distressed planet since the emergence of human species like nearly 2 million years ago, 20 lakh years ago. So a long prehistory of interfaith dialogue entailing the reciprocal relation between religious traditions and the robustness of the very idea of being human and having rights. So basically this para is all about the human rights. Human rights, right? Precedes the recent UN movement of Faith for Rights. Faith for Rights, F4R. The F4R framework has finally been affirmed by the United Nations system. When United Nations was officially announced, officially established on 24th October 1945, UNO was made, UNO was established. After that, UNO worked for this human rights. Human rights, right? The Office of the High Commissioner for Human Rights, OCHR, promoted the Robert Plan of Action in 2012. Note that this happened after the end of the Cold War. Cold War ended in 1991 when USA was disintegrated. When that
socialist ideology was vanished from the world. During globalization and soon after 9/11, 9/11 matlab 11 September 2001, Osama bin Laden and its Al-Qaeda, they demolished the Twin Towers in America. 9/11 attack. So the plan was a result of a series of expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred, underlying legislative patterns, judicial practices and policies. The UN Human Rights Council is shortly going to discuss further the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. Basically, to promote human rights, what steps were taken as per UNO guidelines? This is all about beginning till now. Right? Now, when was the first human rights declaration adopted by UN? And on this day, UN Human Rights Day is celebrated. UN Human Rights Day. It is celebrated on this day. Which will be your answer? A. December 10, 1945. B. September 10, 1945. C. December 10, 1948. D. September 10, 1948. Anybody who can tell us the exact Human Rights Day, UN Human Rights Day? The correct answer would be beta C. 10th of December 1948. Every year we now celebrate Human Rights Day. It is adopted by the United Nations, right? The United Nations Human Rights Council is an body with the United Nations system. Which is a body? Is it A. intergovernmental, B. non-governmental, C. quasi-governmental, or D. multi-stakeholder? This UN Human Rights Commission, what kind of body it is? But it is intergovernmental. That means all the governments of the world, country, they are the part of this Human Rights Commission. So we cannot go away from these councils, right? Chaliye. The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights, and its two optional protocols have been adopted under the auspices of United Nations and are collectively referred to as. All these three organizations, ये तीनों की तीनों organizations को आप collectively किस नाम से जानते हैं? A. Magna Carta Libertatum. B. International Bill of Human Rights. C. International Charter of the Rights of Man and the Citizen. Or D. International Charter of Human Rights. By what name this collective bodies are called? But it is called B. International Bill of Human Rights. This is to be remembered, please. Right? Next. The objective of Faith for Rights is to provide space for a cross-disciplinary reflection and action on the deep and mutually enriching connections between religions and human rights. Which of the following is not, beta, focus on this word, not one of the commitments on faith for rights? Out of these four answers, which is not the one of the commitments, जो commitment नहीं है, वो बतानी है. A. To prevent the use of notions of state religion to discriminate against any individual or group. B. To revisit religious interpretations that appear to perpetuate gender inequality and harmful stereotypes or even condone gender-based violence. C. To refine the curriculums, teaching materials, textbooks to rectify harmful stereotypes and to promote religious dogmatism. These four statements are given. You have to give me which is not a commitment. Not a commitment. But answer D.
रिलीजियस डॉगमेटिज्म को प्रमोट करना, नो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फेथ फॉर राइट. देयर इज नो स्पेस फॉर एनी रिलीजियस एस्पेक्ट इन दिस ह्यूमन राइट कमीशन, राइट? फेथ फॉर राइट्स. Now, in India, which of the following statutory organization is responsible for the protection and promotion of human rights? Which of the following body is there to protect our human rights, for my rights, for your rights? A. National Human Rights Commission. B. National Human Rights Council. B. National Human Rights Commission. C. National Human Rights Organization. And D. Indian Human Rights Council. You must have done in class 9 or 10 democratic rights में. एक चीज मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, पॉपुलरली नोन एज NHRC, National Human Rights Commission. Right? So the correct answer would be NHRC, founded in India in 1993. 1993 में स्टैब्लिश हुआ और एक रिटायर्ड जज इसके चेयरमैन होते हैं. मे बी समटाइम रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी द मेंबर, द चेयरपर्सन ऑफ दिस NHRC. चलो बेटा, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पैराग्राफ है, अगेन ऑन यूनेस्को. देखिए, यूनेस्को न्यू दिल्ली अलॉन्ग विद द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जस्ट फॉर हैव क्लीन गंगा, क्लीन वाटर एंड अदर पार्टनर्स, organized a hybrid event with school children and teachers to celebrate World Water Day 2021. The World Water Day 2021 was celebrated. The event included felicitating the winners of a water conservation awareness program. हर वो व्यक्ति जिसने वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया, they were awarded, they were felicitated, and screening of their winning animations short film. According to an official release, they were awarded. UNESCO launched this nationwide program for school children in India. For all the school children in India, UNESCO, beta clear hai? United Nations Educational United Nations. Now I am giving you the abbreviation UNESCO का full form. UNE, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. UNESCO launched this nationwide program for school children in India in partnership with the National Mission for Clean Ganga. They were in the partnership, National Mission for Clean Ganga, NMCG, the United Schools Organizations, Water Digest and India-based global animation major Toons Media Group. All this was in collaboration. एक संयुक्त प्रयास था entitled H2O. H2O तो समझते ही हो सारे, H2O पानी है. H2O, Water-wise Program for Children of India. This was the title for that. This innovative initiative encouraged school students between the age of 6 to 14 years to submit story ideas for animated short films to raise awareness on water conservation and its sustainable use. Right, so this is the paragraph. सबसे बड़ी बात, World Water Day when it was celebrated, ये अपने को नहीं पता. Question is there. तो तभी मैं बोल रहा हूं कि ये connected questions आपको आने बहुत जरूरी हैं. See, World Water Day is observed on which day? A. April 20. B. April 21. C. March 22. D. May 20. On which day this World Water Day is celebrated? Correct? Correct answer is C, beta, March 22. Every year, Vishwa Jal Divas, World Water Day is celebrated. Right? Now, ये तो अपने क्वेश्चन आपने देखा. The theme of World Water Day 2021 was, किस थीम पे बनाया गया?
What was the theme of that World Water Day? Is it A, valuing water, B, conserving water, C, saving water, और D, drinking water? क्या था थीम उस विश्व जल दिवस का? एक्चुअल में द थीम वाज A, valuing water, जल का महत्व. We have to value the water just if we want to save ourselves from water scarcity, the water shortage. Just in near to year 2025, within next maybe 3-4 years, दुनिया में 2 बिलियन लोग, 200 करोड़ लोग सफर करेंगे एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी से. तो पानी बचाना है, जल है तो कल है. क्लियर? चलिए, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ कैंपेन. ही लॉन्च्ड अ कैंपेन. यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द कैंपेन. आप ये भी देखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर आपने पेपर दिया होता. इसीलिए कह रहे हैं प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट? ए, जल शक्ति अभियान, प्योरीफाई द रिवर्स. बी, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन. सी, जल शक्ति अभियान, नो मोर वाटर वोज. और जल शक्ति अभियान, बिकम वाटर वाइज. एनी आइडिया? कैन यू? आर यू एबल टू? बहुत जरूरी है. आंसर इज बी. बेसिकली it was totally based upon rainwater harvesting. The rainwater harvesting. The Jal Shakti Abhiyan. JSA. Right? Chaliye. Next, the National Water Mission, NWM, has been constituted under the National Action Plan for Climate Change, launched by the Prime Minister of India in 2009. Right? Which of the following is not a goal of NWM, National Water Mission? Out of these 4, which is not the goal of National Water Mission? Pehla, comprehensive water database in public domain and assessment of the impact of climate change on water resources. B, promotion of citizens and state actions for water conservation, augmentation and preservation. C, comprehensive water database in public domain and assessment of the impact of water resource on climate change. And D, increasing water use efficiency by 20%. Which of the following is not a goal of National Water Mission? है ना? राष्ट्रीय जल मिशन का गोल कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर इज सी बेटा. Comprehensive water database in public domain and assessment of the impact of water resource on climate change. Water resource तो है, but climate change पे assessment is not the goal. Right? चलिए जी. In 2019, the Ministry of Jal Shakti was formed after merging the Ministry of Drinking Water and Sanitation and the Ministry of, what do you say? कौन से 2 मंत्रालयों को मर्ज किया गया था 2019 में जल शक्ति को बनाने के लिए? एक तो मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. इनमें से दूसरा मंत्रालय क्या था? कौन से 2 मंत्रालय मर्ज किए गए? ए, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. बी, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. सी, वाटर कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन. एंड डी, इनलैंड वाटरवेज एंड गंगा रिजुविनेशन. कौन सा मंत्रालय मर्ज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के साथ? इट वॉज ए बेटा, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. these 2 ministries were merged and जल शक्ति बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. राइट? चलिए, पैरा नंबर 5. Prime Minister Narendra Modi, during his visit to Bangladesh, congratulated the neighboring country for its 50th year of independence. आपको पता होगा, December 1971, Bangladesh got the independence. जब हमने इंदिरा गांधी की फोर्सेस ने मानिक शाह
जो हमारे कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर, उनकी लीडरशिप में ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग किया गया, जो बांग्लादेश बना. And said that he too had gone to jail while protesting for Bangladesh liberation. वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद डिक्लेयर किया, मोदी साहब ने डिक्लेयर किया कि वो भी बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में खुद जेल गए थे. I was about 22 years old when along with some friends I had protested in favor of Bangladesh during its struggle. He said, I had also protested for Bangladesh struggle. I even went to jail. Pakistan's atrocities in Bangladesh are well known. पाकिस्तान के अत्याचार बांग्लादेश में सब जानते हैं. The pictures did not allow me to sleep. और वो जो तस्वीरें हैं, उन्होंने कभी मुझे सोने ही नहीं दिया. Mr. Modi said, PM Modi said, he also paid respect to the Indian army who fought for the freedom of Bangladesh. भारतीय सेनाओं को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी, रिस्पेक्ट पे किया, जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी. And also paid respect to Bangladesh father of the nation, Bangabandhu. Who was Bangabandhu? Sheikh Mujibur Rahman. He was the father of Bangladesh. Conferred upon him the Gandhi Peace Prize 2020. और उनको गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित भी किया. I pay my respects to Bangabandhu. He gave his life for the people of Bangladesh. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जीवन बांग्लादेश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया. बंगबंधु मुजीबुर रहमान was a ray of hope. आशा की एक किरण थे. He made sure that no country could enslave Bangladesh. और उन्होंने ये चीज इंश्योर कर दी कि कोई भी देश बांग्लादेश को गुलाम नहीं बना सकता. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोट था, ये उन्होंने कहा था. देखिए, नाउ पैराग्राफ में जिक्र है गांधी पीस प्राइज का. तो द गांधी पीस प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर व्हाट? इन द फील्ड ऑफ व्हाट? द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड, इज अवॉर्डेड? ए, नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विलेजेस, एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस. तो गांधी पीस प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर, जब गांधी का नाम आ गया तो भैया नॉन वायलेंस होना जरूरी है ना, अहिंसा का जिक्र होना लाजमी है, राइट? द गांधी पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1995. इट वाज एस्टैब्लिश्ड. और 1995 में पहली बार किसको अवार्ड किया गया था? डॉक्टर जूलियस के नेरेरे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री. आर्क बिशप डेसमंड टूटू, साउथ अफ्रीका के थे. डॉक्टर जॉन ह्यूम, आयरलैंड से. एंड बाबा आमटे, मुरलीधर देवीदास आमटे, इंडिया से. हु गॉट द फर्स्ट गांधी पीस प्राइज? और ये जरूरी नहीं है कि गांधी पीस प्राइज इंडिया से है तो इंडियन को मिलेगा, ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट एसेंशियल. सो गांधी पीस प्राइज वॉज गिवन टू डॉक्टर जूलियस नेरेरे, former president of Tanzania. Beta, Tanzania is a combination of two earlier countries. One was Tanganyika and Zanzibar. So Tanganyika and Zanzibar now had merged, इकट्ठे हुए और एक नया कंट्री बना तंजानिया, राइट? चलिए, which of the following Indian organizations was awarded the Gandhi Peace Prize in 2014? एक organizations को भी मिल चुका है. Which is DRDO, Defense Research and Development Organization, Bhabha Atomic Research Center BARC, Indian Space Research Organization ISRO, and Radha Swami Satsang Vyas. किसको मिल चुका है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को गांधी पीस प्राइज? Exactly, ISRO. The contribution of this organization in the field of space, है ना, मंगलयान, चंद्रयान, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए मिला. जी, शेख मुजीबुर रहमान सर्व्ड एज द फर्स्ट डैश ऑफ बांग्लादेश, बंगबंधु. He was awarded the title Bangabandhu, like father of Bangladesh.
He was the first dash of Bangladesh. Is it Prime Minister, President, Home Minister or Defense Minister? Sheikh Mujibur Rahman was the President of Independent Bangladesh. President. चलिए जी, Sheikh Mujibur Rahman was assassinated basically. He was killed, assassinated. किस डेट को? 15th August 1960, 15 November 1975, 15th August 1975 और 15th November 1960. Come on, the dates compulsory है, necessary है. The correct answer is on the day of Indian independence in 1975, he was assassinated in Dhaka. Sheikh Mujibur Rahman. चलिए, one more paragraph. Let's see. The search for efficient trade routes and better connectivity has been one of the powerful driving force of history. Silk routes की हम बात करते हैं, 4000 मील लंबा land and sea routes also. It has determined the prospects of many nations. कई nations के prospects develop हुए, regions also, civilizations over time. Today, as the world goes through a fundamental rebalancing, अब दुनिया जो है वो दोबारा रीबैलेंस कर रही है, नियंत्रित हो रही है, करेक्टिंग मेनी ऑफ द डिस्टॉर्शंस ऑफ द पास्ट में जितनी गलतियां डिस्टॉर्शंस हुई उसको करेक्ट किया जा रहा है. इट इज ओनली नेचुरल दैट कनेक्टिविटी शुड बी सेंट्रल टू दैट एक्सरसाइज. और ये नेचुरल है कि उस एक्सरसाइज के लिए जो कनेक्टिविटी है वो सेंटर में रखी गई. कनेक्टिविटी मतलब ट्रेड रूट्स को. Growth in trade, commerce, industrial development and technological advancement has gone hand in hand with ease of connecting. Connecting के लिए ये सब चीजों को साथ साथ रखा गया. Growth in trade, commerce, industrial development, technological advancement, they always go hand in hand. इकट्ठे चले. Maritime connectivity, maritime समझते हैं ना बेटा, sea routes में. Maritime connectivity in particular has played a significant role in creating regional corridors for trade and economic linkages, as indeed for cultural and intellectual exchanges over the centuries. The shift in the fulcrum of global economic growth towards Asia is creating unprecedented opportunities for connectivity in the region. बहुत सारी opportunities जो इस region में create हुई. The government of India, recognizing the importance of regional connectivity, made a landmark decision to undertake an overseas port investment in Chahbar. Chahbar port, very important point, जिससे import develop हुई और trade आपका develop. देखिए, the Chahbar Day was commemorated by the Ministry of Port, Shipping and Waterways in which of the following summit? किस कॉन्फ्रेंस में चाहबार पोर्ट, चाहबार डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया? इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट, सस्टेनेबल ओशन समिट, वर्ल्ड ओशन समिट, मैरीटाइम इंडिया समिट. 4. कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ने चाहबार डे कमेमोरेट किया? इट वॉज बेटा मैरीटाइम इंडिया समिट. समुद्री जो भारत है उस कॉन्फ्रेंस में इसको चाहबार डे को सेलिब्रेट किया है, कमेमोरेट किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चाहबार पोर्ट? अब चाहबार पोर्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ ईरान इन ओमान सी. इट हैज मरीन बॉर्डर ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर्स. सी बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी नन ऑफ द अबव, कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी बेटा. ये साउथ ईस्ट ऑफ ईरान में है, ओमान सी के पास, और 300 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है, मरीन बॉर्डर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू चाहबार पोर्ट एंड इट्स इंपैक्ट? आउट ऑफ दीज 4, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विच इज रिलेटेड टू चाहबार पोर्ट? A, it is a transit hub to support landlocked countries of Central Asia. बेटा लैंडलॉक्ड कंट्रीज होता है जिसके चारों तरफ कोई वाटर बॉडीज नहीं है. अफगानिस्तान सब प्योरली लैंडलॉक्ड कंट्री, राइट? इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर.
It will optimize the logistic cost by bringing in efficiency and creating a reliable and safe transport corridor. And D, all the above. मतलब तीनों statements correct हैं. You can have a little mind brain tickling. सोचिए क्या हो सकता है चाबार पोर्ट के बारे में. बेटा सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, चारों करेक्ट हैं. मतलब वो सेंट्रल एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है ट्रांजिशन के लिए. इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में, और लॉजिस्टिक कॉस्ट. ठीक है, चलिए. द चाबार पोर्ट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइलेटरल. बेटा ट्राइलेटरल मतलब होता है तीन कंट्रीज के बीच में, बायलेटरल होता है दो कंट्रीज. ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. चाबार पोर्ट के लिए कौन से तीन देशों में समझौता हुआ, ये बताना हमें. ए इंडिया ईरान अफगानिस्तान, बी इंडिया ईरान इराक, सी इंडिया इराक अफगानिस्तान, ईरान इराक अफगानिस्तान, और डी इंडिया कतर पाकिस्तान. जरूरी नहीं है हर बार कि इराक भी आ जाए, कतर भी आ जाए. करेक्ट आंसर इज इंडिया ईरान एंड अफगानिस्तान. लैंड लॉक्ड कंट्रीज का जिक्र हुआ ना बेटा, तो अफगानिस्तान का जिक्र होना लाजमी था, बिकॉज दैट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, राइट. Which is the special purpose vehicle SPV incorporated for the development and management of Shahid Beheshti Port of Chabar. Shahid Beheshti Port of Chabar, SPV. Indian Port Rail Corporation, IPRC, Western Shipbuilding Private Limited, India Ports Global Limited, Karaikal Port Private Limited. कौन सा है स्पेशल पर्पस व्हीकल? कम ऑन. इट इज सी बेटा, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, IPGL. याद रखिएगा, IPGL, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड. राइट, चलो वन मोर पैराग्राफ, लेट्स सी. इंडिया हैज एडेड सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख. TSO, सो T साइलेंट. Sokar Wetland Complex in Ladakh as its Fortu and Ramsar site. Very important Ramsar site है, which is the second one in the Union Territory of Ladakh. आपको पता है 5th of August, 5 अगस्त 2019 के बाद भारत में यूनियन टेरिटरीज बन गई बेटा दो और. J&K से स्टेटहुड वापस ले लिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटीज बनी. एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण मंत्री थे, शेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन इन अ ट्वीट मैसेज. उन्होंने एक ट्वीट किया कि द सोकार बेसिन इज अ हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स. बहुत ऊंचाई पे है, लेह लद्दाख आपको पता है ऊंचाई पे है. कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रिंसिपल वाटर बॉडीज, starts back, so a freshwater lake of about 438 hectares to the south, and Sokar itself, a hypersaline lake of 1800 hectares to the north. तो यहां पे दो चीजों का जिक्र हुआ. एक है सेपक सो और एक है सोकार इटसेल्फ. दो चीजें. सिचुएटेड इन द चंगथांग रीजन ऑफ लद्दाख. चंगथांग रीजन में ये सिचुएटेड है. इट इज कॉल्ड सोकार, मीनिंग व्हाइट लेक. TSO, सो व्हाइट लेक, बिकॉज ऑफ द व्हाइट सॉल्ट afluorocene found on the margin due to the evaporation of highly saline water. नमक के भंडार थे. The Sokar basin is an A1 category important bird area. A1 category important bird area as per BirdLife International and a key staging site in the Central Asian Flyway. बेटा ये पैराग्राफ में आपकी कंसंट्रेशन होनी बहुत जरूरी है. कंसंट्रेशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. The site is also one of the most important breeding areas of black-necked crane, Grus nigricollis in India. It was a black-necked crane. This IBA is also a major breeding area of great crested grebe, है ना. The Podiostratus, bar-headed geese, ruddy shelduck, brown-headed gull,
lesser sand plover, and many other species. All these are the precious species found there. So now, on this basis, hopefully, questions are simple, paragraph is too long, isn't it? So, which of the following site in India is not included in Ramsar wetland list? Beta, not included. Again, focus on the word not. Asan Conservation Reserve, Uttarakhand. Dal Lake, J&K. Kabartal wetland, Bihar. And Lonar Lake, Maharashtra. Which of the following is not included? Ramsar wetland mein. Dal Lake was not included. Right? The word wetland day is celebrated. Yes, जब wetland day का जिक्र हुआ तो आपको ये भी आना चाहिए. The word wetland day is celebrated on February 15, February 6, February 2, February 28. कौन से दिन? Come on. Let's see. The correct answer is C, beta. February 2. 2nd February every year is celebrated World Wetland Day. हर साल World Wetland Day के तौर पे मनाया जाता है 2nd Feb. 2021 का जो World Wetland Day था उसका थीम क्या है? The theme for World Wetlands Day 2021. It was A. Wetlands and climate change. B. Wetlands and water. C. Wetlands and biodiversity. And D. Wetlands for our future sustainable livelihoods. अब ये देखो चारों नजदीक हैं. All 4 answers are next to the perfect. तैयारी होगी, पढ़ा होगा, तभी आएगा बेटा ये करेक्ट आंसर. The answer is B. Wetlands and water. Right? The world's largest mangrove forest कहाँ पे located है? The world's largest mangrove forest is located in A. Sundarban mangrove, Pichavaram mangrove, Florida mangrove, Godavari Krishna mangroves. कहाँ लोकेटेड है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा. तो मैंग्रोव बनते हैं सुंदरबन में और यहां पे पेड़ कौन से पाए जाते हैं? सुंदरी ट्रीज. सुंदरी ट्रीज. राइट? चलिए. On the occasion of World Wetland Day 2021 and as a part of commitment towards conservation, restoration and management of India's wetlands, establishment of a center was announced by the name of, किस नाम पे एक सेंटर बना? A Center for Wetland and Coastal Management, Center for Wildlife Conservation and Management, Center for Wildlife Management, and Center for Wetland Conservation and Management. Again, near to the perfect answer. But the correct answer is D, beta, Center for Wetland Conservation and Management. So these kinds of questions come in your paper. So I hope this session will be very fruitful for you. This will be giving you the complete insight of all the questions of current affairs कि कैसे comprehension based question आते हैं और उस comprehension में से हर question का answer मिलना is next to impossible. तो वहां पे फिर आपकी intellectual thought काम करेगी कि आपको proceeding, succeedings, उस event, उस happening, mishappening के बारे में पता होना चाहिए. So I hope you have gained too much from this session. आपको idea मिल गया होगा. So we will be soon meeting in the next session. Till then, thank you so much. You take very good care of yourself. See you all. Take care. Bye-bye.